Hope you guys are doing well. In this video, we are going to design an online bidding system. Let's start with functional requirements. So first requirement is users can register and log in. The second requirement is sellers can list items for bidding. The third is buyers can place bid on open items. The next is the highest bid wins when the auction ends. The next is real-time updates of highest current bids. It's also include notifications, right? And we can also take auction management so that increase the time when the auction is close to end, right? Or maybe reserve price, etc. So auctions management. So sounds good. Okay, so now let's note down the known functional requirements. So definitely our system must be highly available. That means almost 99.99% highly available. Next is a system must be highly scalable. We can consider almost 1 million daily active users, so highly scalable. And API must have low latency. And since it is related to bidding system, we have to ensure real-time performance. And we also have to include, since I believe consistency played a very vital role, so we should go with a highly consistent system, right? Highly consistent. And definitely fault tolerance. Sounds good? Okay. Let's start with capacity estimation. I'm going to take a couple of assumptions, that is total users 10 million, daily active users 1 million, concurrent peak is 10% of DAU. Okay, and let's also consider average active auctions per day, that is we can say 500k. All right, and average bids per auction, that we can consider 50. So almost total bids per day is 50 500k into 50, that is around 25 million. Let's consider also bid size 0.5 KB per user per action, auction size 1 KB, and also let's assume the retention is 1 year. So in this way, if we are going to calculate storage, that means users, we have daily active users 1 million, total 10 million, so that means 10 million into 0.5 KB, correct? That is approximately 5 GB per day. All right, similarly, if we go with auctions table, 500k, since active auctions per day is 500k. All right, and we assume 1 KB, correct? So that is 0.5 GB per day. So per year will be 1 year retention, that means 0.5 GB 365, right? So that means 180 GB. Similarly, bids table, so 25 million per day bids, and we consider 0.5 KB, right? That is lump sum at 12.5 GB per day. 1 year, 12.5 GB into 365, that is around 4.5 TB. So now if we consider the total storage is 5 GB plus 180 GB
plus 4.5 TB. So approximately 4.7 TB per year. All right. Now let's move to traffic. So let's say if we talk about write throughput, right? So 25 million per day. So that means around 290 bits per second. So if we consider peak, that is 10x, or we can say 5x, that is around 1500 bits per second. Similarly, read, so let's say V1 million DAU, correct? And so let's say any user perform 10 views or something like that, or we can say 20 auctions per day. That means almost 20 million views or something like that. Okay, so it's around 20 million views per day. That means almost 230 reads per second, and peak is, it must be 1500 reads per second. All right, and since it's related to real time, definitely we have to use WebSocket. So we can simply go with the 1 million concurrent users during peak. Let's assume 20% connected to live auctions, so that means 20,000 WebSocket connections. All right. So I think we have done with the capacity estimation. We calculated storage, traffic, and WebSocket connections. So in HLD, basically we have three types of users: buyers, sellers, and admin. Buyers जो simply bid place कर सकते हैं, sellers जो basically item list करेंगे जिसपे auction होगी, and administrator basically admin यानी कि जो आपकी auctions को manage कर सकते हैं, right? So now I am putting एक load balancer here. So load balancer हमारे traffic को distribute करेगा, and I'm going to use microservice architecture. So I am putting API gateway. Then next is basically, so API gateway can do logging, routing, rate limiting, etc. So as our functional requirement, the first requirement is user, right? So we have to put user service, right? So users service. So by this, basically users can do registration, login, and all. So it will manage all this stuff, and it will talk to a relational database, I would say, that is best to use. The next service is basically item service. So item service is basically जो भी items आपके auctions के लिए available होंगे, यानी कि sellers उनको add कर सकते हैं. And in this basically we will manage all different kind of items. So I would say there will be no fixed schema or structure. Maybe कि आप मोबाइल की बिडिंग लग रही हो, maybe कार की लग रही हो, maybe household की लग रही हो. So different kind of items can be available. So I would say we can go with a NoSQL kind of database that will be more suitable for this. So I'm going to use MongoDB here, right? And also since this service is basically, so this service is basically responsible for items. So items में कुछ images भी हो सकती हैं, right? So for images we can use AWS S3 to store. So MongoDB cluster, that is one database, and second is basically AWS S3. So these two database, API gateway is the entry point for all the microservices. So now the next service is basically bidding service, right? So ये सर्विस हमारी जो भी हमारी बिड्स लगेंगी उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का जो भी प्रोसेस है,
सिस्टम जो एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा उसके लिए है, राइट। So again, bidding service के लिए we can again use a relational database and NoSQL database, both kind of database. But since bidding is happening on a very high scale, right? So we specifically required low latency kind of database which can perform reads and write very intensively. So in my opinion, we can use Amazon DynamoDB for bidding. This is a self-managed service and specifically highly scalable as well. Now we should have another service, that is auction service. That is a main service, I would say. So in this basically, so to manage auctions, reserve price, etc, जो भी है आपका ऑक्शन को एक्सटेंड करना है, मैनेज करना है, स्टार्ट करना है, whatever that will be, we can manage from here. And we can use NoSQL type database for this, that is suitable. All right. And we need real time notifications, right? जो भी आपकी बिडिंग लग रही है, ऑक्शन स्टार्ट हो रही है, we need a specific notification service जो क्विकली हर एक कस्टमर को बेसिकली नोटिफाई करे व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, राइट। सो स्पेसिफिकली हमें एक सर्विस और यूज करना पड़ेगा, दैट इज सो नोटिफिकेशन सर्विस, right? And since all things are happening on a very scale, I would say specifically जो भी आपकी बिडिंग है, ऑक्शन आइटम्स है, नोटिफिकेशन सर्विस को कहां से डेटा मिलेगा, सो वी कैन पुट ए काफका क्लस्टर हियर एंड दैट काफका क्लस्टर बेसिकली बिडिंग सर्विस से बात करेगा, ऑक्शन सर्विस से बात कर लेगा एंड नोटिफिकेशन का डेटा भी। तो वी कैन यूज डिफरेंट टॉपिक फॉर डिफरेंट basically process. So यहाँ पर हम एक I'm going to put one Kafka cluster, right? So this basically this notification service talk to this bidding service will, and the same time this service also talk to this, and we need one more service that specifically जो हमारी विनर्स डिसाइड करेगी, राइट। बिडिंग सर्विस, बिडिंग हो रही है, ऑक्शन स्टार्ट हो गया, सो देयर शुड बी वन सर्विस जो पूरे कह सकते हैं ना कि ऑक्शन मैनेजमेंट और ऑक्शन प्रोसेसर सर्विस काइंड ऑफ स्टफ। तो वो बेसिकली काफका क्लस्टर से आपका डेटा ले लेगी, ठीक है। तो जो भी हमारा डेटा बेसिकली आप इसको बिडिंग सर्विस से, ऑक्शन सर्विस से, यहाँ से डेटा मिल गया, राइट, एंड नोटिफिकेशन भी यहाँ से कर जाएगा। तो एंड इवन आई थिंक आइटम्स, जो आइटम ऑक्शन के लिए अवेलेबल है, दैट इज आल्सो वी कैन सेंड टू काफका, ताकि उसे पता चल सके कि भाई इस सर्विस पे ऑक्शन स्टार्ट हुई है, राइट। सो दैट आल्सो टॉक टू दिस, करेक्ट। सो ऑक्शन प्रोसेसर सर्विस, करेक्ट। सो ये दिस सर्विसेज विल पिक द डेटा फ्रॉम हियर, राइट, एंड देन सेंड बैक टू द डेटा क्लाइंट। सो बेसिकली ये कंप्लीट डेटा को प्रोसेस करेगा और एज ए कंज्यूमर सर्विस जो आपका बिडिंग का डेटा है, ऑक्शन का डेटा है, उसको कंप्लीटली एक एल्गोरिथम और लॉजिक के साथ पूरा प्रोसेसिंग करेगा एंड जो भी ऑक्शन की हाईएस्ट बिडिंग होगी उसको भी बेसिकली उसका नोटिफिकेशन इन वापस क्लाइंट को वापस देगा, दैट मीन्स द सेम वे, राइट। एंड इवेंचुअली वी हैव टू स्टोर द विनर ऑफ द पर्टिकुलर ऑक्शन, और मे बी वी हैव टू मैनेज a leaderboard kind of stuff. So I would say for that purpose we have to put one Redis cluster, okay. So basically whenever, so this is our Redis cluster, correct, and this cluster, so auction processing के बाद जो भी हमारा विनर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। एंड अगर हमें स्पेसिफिकली लीडर बोर्ड भी मेंटेन करना है तो उसके लिए फिर हमें बिड सर्विस से जो डेटा आ रहा है तो यहाँ से हमें वो डेटा भी यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा अगर हमें लीडर बोर्ड मेंटेन करना है, स्कोर मेंटेन करना है। सो दैट इज इवेंचुअली वी कैन, बट
वो हमने स्कोप में नहीं रखा था, तो बिडिंग के विनर के लिए रखा था। तो दैट इज कि जो भी हमारा यहाँ से आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी हमारा बेसिकली विनर होगा, वी कैन स्टोर इन रेडिस क्लस्टर एंड गेट बैक टू द क्लाइंट, राइट। सो यहाँ पे आपका इससे बेसिकली तो वी कैन स्टोर लाइक सो अगर अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देखें एक बारी, यूजर्स हो गया, सेलर्स आइटम लिस्टिंग बिडिंग हो गया, बायर्स कैन प्लेस अ बिड, बिडिंग सर्विस, हाईएस्ट बिडिंग को हमने यहाँ पर एंड ऑक्शन को हमने रेडिस में स्टोर करा दिया, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गई, बिडिंग हमने यहाँ पर स्टोर कर ली, बिडिंग सर्विस इज टॉकिंग टू दिस पर्टिकुलर डेटाबेस। एंड ऑक्शन मैनेजमेंट आपका ऑक्शन सर्विस कवर करेगा जो हमारा आरडीएस से बात कर रहा है। एंड रियल टाइम अपडेट्स एंड फॉर द हाईएस्ट कंकरेंट बिड्स, तो नोटिफिकेशन जो कस्टमर्स को भेजना है, सो हमारा ऑक्शन का, बिड्स का, आइटम्स का कंप्लीट डेटा यहाँ पर भी पुश हो रहा है। तो डेट नोटिफिकेशन सर्विसेज डायरेक्टली टॉक टू दिस काफका क्लस्टर। तो इंपॉर्टेंटली जो भी नोटिफिकेशंस है वो कस्टमर को यहाँ से चले जाएंगे, राइट। सो आई थिंक दिस इज गुड टू मूव फॉरवर्ड। लेट्स स्टार्ट विद डेटाबेस। सो users table, so we can store user ID, name, email, password, right, and of course created at, right. So this is our primary key, begin, name, email, password. We can use varchar, right. Password should be right, and email is definitely unique constraint or unique index, right. Created at and modified at is basically timestamp. Now let's move to items, right. So items, again the item ID, right, big int pk, all right. And then title varchar, right, maybe some description, that will be text, right. Then maybe a category, and then it might be have as we discussed, right, image URL. So again a text, right, and then again created at a timestamp, and yes, of course we have to modify at, right. And important is we have to store who created this item, right. So that means we have to store let's say created by, right, created by, that means a user ID, begin foreign key, correct. That means begin, this is seller. All right, looks good. Now move to the bidding table, bid ID, right, and auction ID. So we need auction ID here. So I would say let's create auction table first. Yes, we can use database accordingly, but I'm just defining the schema. So what kind of the columns or what kind of the data we have to store, right. So वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, right. So auction table, definitely we have auction ID, then all right, then we need item ID, seller ID, we need start time of auction, right, end time, is there any starting price for any auction item, right. We can store, if we can store any reserve price as well, reserve price for item,
right? All we can store for like the start time and time is timestamp, starting, the prices can be in decimal, right? And this is also in decimal, correct? And the most important is because we have to notify users what exactly the current high bid. So we can store here, right? Current highest bid and current highest bidder ID. Then we have to maintain the status. This is auction ID status, so that means we can use enum kind, right? And we can use new or scheduled, active, right? Completed, in process, kind of, right? In process, in progress, I would say is the right one. Completed, or might be we can use cancelled status as well. All right, and created at, or even we can store created by or updated by and updated at. Anything if I'm missing here, this is pretty good to move forward. So let's say let's move to the bids table. Bid ID, auction ID, and then the most important one is user ID, right? And then bidding amount in again in decimal, user ID is in big int, auction ID again we can use a big int. What else is created at? Okay, sounds good. We are not using modify yet because bid को modify नहीं करेंगे. If you want to put a higher bid, then a new row will insert it. So definitely one more important thing, that is we still did not decide the winner, where we have to store winner. So we can say, maybe we can say auction result, right? All right, and in this basically what exactly we have to store here, that is first is definitely auction ID, then who is the winner user ID, correct? Winner bid amount, and definitely we can store closed at auction आपका कब close हुआ, right? कब ये winner basically declare हुआ, and that is basically timestamp. This is decimal again. So guys, database wise we are looking very sorted. Now let's quickly talk about APIs. So first is user APIs, जिसमें हम register करेंगे, login है, logout है, simple जैसा हमने अपना entities में define किया था, right? Name, email, password, etc. वो सारी चीजें हम यहाँ पर ले सकते हैं. The next is items APIs, right? तो यहाँ पर अगर हमें item post करना है, कोई नया item create करना है, post call रहेगा. then अगर एक item ID get करनी है, get, update के लिए put and delete, right? Similarly इस तरह का body, post body हम use कर सकते हैं जो हमारे entity के according, correct? Now the next is the most important one, that is auction. Auctions का basically इस तरह की APIs हो सकती है कि auction currently live है, या any auctions is upcoming है, राइट? या शेड्यूल है, करेक्ट? तो स्पेसिफिकली किसी ऑक्शन आईडी का स्टेटस चेक करना है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज कि ऑक्शन कंप्लीट होने के बाद जो विनर है, जो हमने यहाँ पर स्टोर कराया था ऑक्शन रिजल्ट में, राइट? सो वो बेसिकली हम यहाँ से इस एपीआई से निकाल सकते हैं आफ्टर ऑक्शन एंड, राइट? ऑक्शन आईडी एंड विनर का डिटेल्स आ जाएगा, करेक्ट? एंड सिंपली ऑक्शन में हम जो हमने डेटा लिया था, जो हमारी आइटम आईडी चाहिए, राइट? ऑक्शन आइटम्स, ऑक्शन आइटम आईडी, ऑक्शन आईडी, इस तरीके से बेसिकली हमारा बॉडी जा सकता है कि स्टार्टिंग प्राइस ये है एंड ऑल, और मे बी रिजर्व प्राइस रख सकते हैं, स्टार्ट टाइम एंड टाइम इस पर्टिकुलर ऑप्शन का. तो इस तरीके से आपकी एक न्यू ऑप्शन क्रिएट हो जाएगी जिसको आप शेड्यूल कर सकते हैं या अपकमिंग जो है दिखेगी इस तरीके से, राइट? The next is basically bid APIs, that is very important and core. जो यहाँ पर या पोस्ट API है जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम पे
बिड लगा सकते हैं, बिड प्लेस कर सकते हैं। अगर उस बिड को गेट करना है सेम आइटम पे तो ये हमारी कॉल हो जाएगी। एंड अगर स्पेसिफिकली हाईएस्ट बिड गेट करना है तो ये जो हमारा करंट हाईएस्ट बिड चल रहा है वो हमारा इस एपीआई से होगा। तो 3 APIs आई हैव यूज्ड इन बिडिंग सर्विस, राइट। एंड जैसे मैंने बात किया था, सिंस इट्स रियल टाइम अपडेट्स होना चाहिए, रियल टाइम बेसिकली कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन बिडिंग सिस्टम में। तो स्पेसिफिकली वी हैव टू यूज वेब सॉकेट व्हेन क्लाइंट एंड बैकएंड सर्विस के बीच में, राइट। हम SSC भी यूज कर सकते हैं, वेब सॉकेट भी यूज कर सकते हैं। वेब सॉकेट बेसिकली रियल टाइम बाई डायरेक्शनल रियल टाइम अपडेट्स बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा इससे, राइट। तो हम जब भी नोटिफाई करेंगे कि भैया कोई विनर है, आउटबिड हो गया है, या ऑक्शन जल्दी सून खत्म होने वाली है, या कोई भी हाईएस्ट बिड का अपडेट है, जो भी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जो भी हमारा बिडिंग के टाइम पे जब भी हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पर वेब सॉकेट कनेक्शन क्लाइंट साइड से बनना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको बेसिकली कैपेसिटी एस्टिमेशन में भी बताया था, हाई लेवल डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया था, एंड नाउ मैंने उसको यहाँ पर भी बेसिकली पुट किया। Design is completed, so we can discuss couple of trade-offs specifically. Right, so let's go through a final steps. Right, functional requirement जो हमने डिस्कस किया था वो सारी हमारी completed है, नॉन फंक्शनल हमने लेके रखा है। सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिकली अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और सिंगल पॉइंट फेलियर ना हो, इसीलिए मैंने लोड बैलेंसर और एपीआई गेटवे दोनों रखा है। यहाँ पर भी हम मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ एपीआई गेटवे और मल्टीपल लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं, राइट। मल्टीपल इंस्टेंस की बात मैं बात कर रहा हूँ, राइट। एंड सिमिलरली एज पर द स्ट्रक्चर और किसी भी स्पेसिफिक सर्विस के लिए मैंने इसीलिए डिफ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को चूज किया। एंड नोटिफिकेशंस के लिए काफका क्लस्टर भी रखा है जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्केल किया जा सकता है। क्विकली और फ्रीक्वेंट विनर और लीडर बोर्ड मेंटेन करने के लिए रेडिस क्लस्टर रखा है। बिडिंग सर्विस जहां पर रीड्स एंड राइट बहुत फ्रीक्वेंट होंगे, इसीलिए आई हैव चूज्ड Amazon DynamoDB। आइटम सर्विस जिसमें स्पेसिफिकली कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था, तो दैट्स व्हाई आई हैव चूज्ड MongoDB। तो ऑलमोस्ट एवरी सर्विस के रिगार्डिंग जो भी स्पेसिफिकली डेटाबेस है वो ऑलमोस्ट बेस्ट है। स्टिल यू गाइस हैव एनी सजेशंस, देन आई एम हैप्पी टू hear out from you in comment section. And this is very standard and basic, राइट। एंड बहुत ही सिंपल एंड प्रिसाइज रखा है, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। स्केलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी अपन लोगों ने इजीली वर्टिकल स्केल हो जाए, हॉरिजॉन्टली स्केल हो जाए, इसीलिए डिफरेंट टाइप यानी कि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस का भी यूज़ किया है। एंड आइटम्स को बेसिकली फिजिकली स्टोर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड AWS S3 भी यूज़ किया है ताकि हमें कभी स्टोरेज का टेंशन ना हो। एंड स्पेसिफिकली रियल टाइम सिस्टम लोड यानी कि वेब सॉकेट जहाँ पर भी हमारा यहाँ पर हम रख सकते हैं लोड बैलेंसर के बाद API गेटवे के यहाँ पर बीच में, राइट। यहाँ पर हम वेब सॉकेट रख सकते हैं ताकि हमें बेसिकली जो भी हमारा कम्युनिकेशन है, चाहे वो बिडिंग और ऑक्शन के टाइम पे बेसिकली हमारी जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग हो सके। तो हम नोटिफिकेशन सर्विस पे यहाँ पे एक वेब सॉकेट भी रख सकते हैं। दैट इज बेसिकली वी कैन ऐड अ सिंपल वेब सॉकेट गेटवे रख सकते हैं जिसमें हम मल्टीपल वेब सॉकेट कनेक्शन बन जाएंगे कनेक्ट। तो इस तरीके से बेसिकली तो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिजाइन है। रेस्ट you guys can hope you like this particular video. Thank you very much.